ऑलराइट, सो आपके पास वेब सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, इट्स बेसिकली मैसेज डिलीवर्ड ओवर सम ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। वेब सर्विसेज पे हम में जो तीन एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पास एक XML होता है, एक HTTP होता है, एक SOAP होता है। XML बेसिकली कॉमन मैसेज फॉर्मेट है, HTTP कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्मेट है, और SOAP जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक लाइट वेट access protocol होता है, which is used for exchange of information or messages over a distributed or decentralized environment, ठीक है। तो बेसिकली XML यूज़ कर रहा होता है, और उस XML को यूज़ करने की वजह ये होती है कि इट इज़ यूज टू हैव to communicate information on independent platforms, on cross platforms, on OS, on different OS systems, on different programs, using different programming languages, right? So independence लाने के लिए हम SOAP यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा यस, सो दैट्स बेसिकली SOAP। SOAP बेसिकली का जो फुल फॉर्म होता है वो है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जिसकी वजह से वेब सर्विसेज बनी हुई हैं, और ये SOAP पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्लोप सोप की जो इंट्यूशन जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होगी, जैसे जब मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने जाऊँगा, तो जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। सोप के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट होता है एनवेलप का, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए, इसके बगैर सोप इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट होता है हमारे पास हेडर, विच इज़ ऑप्शनल, बॉडी एंड फॉल्ट, अगेन दीज आर ऑल ऑप्शनल्स, बट एनवेलप अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो एनवेलप एंड बॉडी आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेडर एंड फॉल्ट आर ऑप्शनल। नाउ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं, हमारे पास XML का वर्जन हमने बताया हुआ और एनवेलप बताया हुआ है। इस एनवेलप के अंदर हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट सब एलिमेंट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। एक है मेरे पास XML नेम स्पेस कोलन सोप इक्वल्स टू ये W3 की कोई वो होगी, लिंक होगी, और दूसरी है आपके पास सोप इंकोडिंग स्टाइल। नाउ सोप इंकोडिंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है, इस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एंड देन यू हैव योर हेडर, एंड देन यू हैव योर बॉडी, एंड देन यू आर क्लोजिंग योर एनवेलप। नाउ सिंटेक्स रूल्स, वन, आपका सोप का मैसेज सिर्फ और सिर्फ XML में लिख सकते हैं, और किसी और चीज़ में नहीं लिख सकते, क्योंकि XML आपके पास मैसेज फॉर्मेट है, तो जेसन भी आपके पास एक और एक मैसेज फॉर्मेट है, लेकिन आप सोप को जेसन में नहीं लिख सकते। सोप इज़ ओनली रिटन इन XML। सेकेंडली, सोप के अंदर इट शुड हैव इंकोडिंग स्टाइल। नाउ व्हाट इज़ इंकोडिंग स्टाइल? इंकोडिंग स्टाइल बेसिकली आपकी डिफ़ाइन करने डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। कि बेसिकली सोप के अंदर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर रहे होते, वी आर ऑल्सो सेंडिंग हाउ टू सेंड इट्स डेटा टाइप्स एंड इट्स डेफिनेशन। सो यू कैन सी ओवर हेयर हाउ डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड टाइप डेफिनेशंस आर ट्रांसमिटेड एज वेल। सो हम इसलिए भी यूज़ कर रहे होते हैं सोप को। सो दैट्स द रीज़न वाई वी आर यूजिंग एनकोडिंग स्टाइल, क्योंकि वो सारे डेटा टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा होगा। और अगर आप एनवेलप नहीं यूज़ करेंगे तो वो आपको एक एरर दे देगा, और वो आपका पूरा मैसेज जो है, बॉडी का मैसेज, वो डिस्कार्ड कर देगा। नाउ so the three things are done, envelope is done, it is written in XML, the third is encoding style. Now the don'ts, right? So it cannot have a DDD type definition, which is basically I don't remember what D was standing for, but TD is basically type definition जो हमने first chapter में पढ़ा था. So it cannot have DDD reference, and also it cannot have XML processing information. Okay, सो बस एक चीज़ है कंज्यूमिंग वेब सर्विस की, एक मेरे पास एक हेडिंग थी, एंड जस्ट रिमेंबर कि जो तुमने लैब टास्क किया था, इट्स अबाउट दैट थिंग, राइट, कि तुमने एक वेब सर्विस बनाई थी, एंड देन सम अदर एप्लीकेशन और वेब फॉर्म और यूज़र फॉर्म वाज बेसिकली यूजिंग दैट वेब सर्विस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर मिड टू, बट जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। नाउ इंकोडिंग स्टाइल हमने डिस्कस कर ली। बेसिकली इंकोडिंग स्टाइल का जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर, मतलब इट्स नॉट यूज फॉर, बट इट जब भी एनकोडिंग स्टाइल किसी एलिमेंट पे लगती है तो वो उसके एलिमेंट और उसके चाइल्ड एलिमेंट्स पे सब पे एप्लीकेबल होती है। नाउ सोप हेडर एज आई सेड ऑप्शनल होता है, अगर सोप हेडर यूज़ कर रहे हैं, सो इट नीड्स टू बी बिलो एनवेलप, ठीक है। इट कंटेन्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइक
authorization and transmission and all of that, right? So not authorization, but authentication and transactions and all of that stuff. um, right, so we've discussed this point, and the third point is all of the headers child elements must be so all of the headers child elements must be namespace qualified. Now namespace qualified जो होते हैं सोप के वो तीन होते हैं. एक होता है आपके पास इंकोडिंग स्टाइल जो हमने अभी भी पढ़ा ऊपर, दूसरा होता है आपके पास एक्टर, तीसरा होता है आपके पास मस्ट अंडरस्टैंड. नाउ मस्ट अंडरस्टैंड क्या करता है, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक हेडर लिखा हुआ है जिसके अंदर मेरे पास एक मैसेज है ट्रांजैक्शन का, एंड देन हमारे पास XML नेम स्पेस मैसेज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन, एंड देन वी हैव योर एट्रीब्यूट विच इज सोप मस्ट अंडरस्टैंड इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड देन यू हैव सम वैल्यू एंड देन यू आर क्लोजिंग योर ट्रांजैक्शन. सो ये मस्ट अंडरस्टैंड का मतलब ये होता है कि आपका अगर ये सेट टू 1 हुआ है, इट मीन्स दैट योर ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिकग्नाइज, इट मस्ट बी द रिसीवर मस्ट बी एबल टू प्रोसेस इट. ठीक है, इफ़ इट इज़ सेट टू 0 देन इट्स नॉट नेसेसरी. एंड सिमिलरली जब हम फॉल्ट एरर्स में बात करेंगे तो हमारे पास मस्ट अंडरस्टैंड का यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ मस्ट अंडरस्टैंड इक्वल्स टू 1 देन द एलिमेंट, इफ़ मस्ट अंडरस्टैंड इक्वल्स टू 1 और एलिमेंट रिकग्नाइज नहीं होता तो फिर वो फॉल्ट एरर दे देता है, फॉल्ट कोड देता है उसका. So that was must understand. The second is your actor, right? So actor basically ये होता है कि soap का जो message होता है वो बहुत बड़ा होता है, right? So it's not always the case कि हम हमेशा एक start to end position पे जाके हम सारा का सारा payload या जो भी content है या जो भी message है वो deliver कर रहे होते हैं. Maybe at some end points in between we want to deliver some of the information. जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि ये blue जो shaded part है, you just want to send this information over here and you don't want that information to be at the ultimate end point. So for that you're using your actor. ठीक है, so not all parts of it must be intended for the ultimate endpoint. So actor is used to address header element to specific endpoint. I've discussed this. So again, as we wrote the same way, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था XML namespace n transaction, क्योंकि हम transaction वाले endpoint पे, और then soap actor, and then basically ये आपका endpoint है जहाँ पे ये ultimate endpoint है, और ये आप बोल रहे हैं कि बीच में मुझे ये information यहाँ पे फेंकनी है. Alright, so we have defined what is the 3 different default namespace, qualified namespace which must be mentioned in the header. ठीक है, अब हम बात करते हैं body की. So body is basically responsible for sending the information to the to where, to the ultimate endpoint, to the destination, right? And इसके अंदर जो भी आपके child elements होते हैं, it is not necessarily that they have to be namespace qualified of soap's namespace qualified. So अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास message जो है ये get price का, this is not namespace qualified for the soap message, right? but हम इसको use कर सकते हैं. यही चीज़ अगर मैं header में लिखता तो वो incorrect हो जाती है. So you can write this in your body. So it's very simple. So body XML namespace message endpoint, and then आपके पास एक get price का message है, एक item का message है. item के message के अंदर आपने apples की value pass की हुई, and then you're closing the tags, and then you're closing this tag, and then you're also closing the envelope, because if you remember you have your envelope and then आपके पास header होता है and then body होती है. इसका अगर response होगा, so it will be the same endpoint, सेम एंड से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है. अगेन द प्राइस विल बी सेम, लेकिन प्राइस के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी दैट कैन बी चेंज. सो नाउ गेट प्राइस के मेथड के अंदर एप्पल्स की जो इन्फॉर्मेशन है दैट वुड बी रिप्लेस बाय प्राइस का टैग, एंड देन यू विल गेट योर प्राइस की वैल्यू, एंड देन यू आर क्लोजिंग ऑल ऑफ द टैग्स. फॉल्ट एलिमेंट जो होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर status and your errors, messages and all of that stuff. Okay, it can only be a child of your body element, and it can only exist once. Now there are 4 different like sub elements to your fault. So like fault string hoti, which is basically telling you, hey, what is your human readable format के फॉल्ट है क्या. एक होता है फॉल्ट कोड, जो कोड बता रहा होता है फॉल्ट कोड के बारे में. एक होता है आपके पास डिटेल्स, विच आर लाइक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द एरर. And then you have the fault actor कि कौन से पॉइंट पर आके वो फॉल्ट अकर हुआ है. Then you have your fault codes. So fault codes जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये यहीं पे आ जाएगा. version mismatch basically हमें ये बताता है कि जो हम यहाँ पे लिख रहे थे
अगर इसका और आपका इंकोडिंग स्टाइल का नेम स्पेस अगर डिफरेंट है, अगर उसका वर्जन डिफरेंट है, तो वो अब आपको एरर दे देगा। एक मस्ट अंडरस्टैंड का क्लाइंट का ये है कि शायद इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट सेंड कर रहा है उसके अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो उसकी है वो इनकरेक्ट है, या फिर इनकरेक्टली ट्रांसमिट हुआ है, या इनकरेक्ट फॉर्मेट में ट्रांसमिट हुआ है। और सर्वर बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है सर्वर के साथ और इन्फॉर्मेशन जो भी है वो प्रोसेस नहीं हो सकती। देन वी हैव योर सोप बाइंडिंग। सो अब तक हम अभी पूरी बात कर रहे थे वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सोप मैसेज था, लेकिन वी स्टिल डोंट नो हाउ द मैसेज इज बीइंग कम्युनिकेटेड। सो द मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग HTTP, either HTTP or SMTP. SMTP is only used in particular cases and like in the last resorts, but mostly हम HTTP यूज़ कर रहे होते हैं। So हमारे पास एक होता है पोस्ट, एक होता है हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है। So over here you have post and then your कौन सी क्या कहते हैं कौन सी एंड पॉइंट पे। सो आई थिंक दिस एंड दिस शुड बी सेम, सो दिस थिंग एंड दिस शुड बी सेम। There's this is maybe a type where I might have to check that, and then you have your HTTP which version it has. So basically HTTP के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, दो हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपके पास कंटेंट टाइम, दूसरा होता है आपके पास कंटेंट लेंथ। लेंथ बेसिकली ये बताती है कि कंटेंट का मैसेज की जो भी रिस्पॉन्स का मैसेज आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है, इन डिफाइन इन बाइट्स, राइट, XML बॉडी की। और कंटेंट लेंथ टाइप बेसिकली बता रहा होता है कि किस टाइप की एप्लीकेशन है और वो उसकी कौन सी इंकोडिंग स्टाइल है। सो MIME बता रहा होता है द टाइप ऑफ मैसेज एंड इट्स इंकोडिंग। तो एक एग्जांपल है हमारे पास एप्लीकेशन, यही वाली बता देता हूँ। तो हमारे पास ये बेसिकली एक एग्जांपल है, ये हमारे पास बेसिकली एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम बता रहे हैं क्या कि रिक्वेस्ट ली, गेट स्टॉक प्राइस की, रिस्पांस आया स्टॉक नेम, ठीक है, होस्ट आ गया हमारे पास, तो होस्ट भी आपको बताना होता है, ठीक है, कि होस्ट वेबसाइट क्या है। एंड देन यू हैव योर कंटेंट टाइप विच इज़ बेसिकली एप्लीकेशन सो प्लस XML, एंड आपने यहाँ पर देयर इज़ अ कोलन ओवर हेयर, like over here, and then you have your char set equals to UTF-8, and then you have your content length which is 256, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्जन बता दिया, एनवलप डिफाइन कर दिया, एंड देन यू हैव योर बॉडी, एंड देन आपने बॉडी का बेसिकली एंड पॉइंट रख दिया कि इन स्टॉक जो है वहाँ से आ रहा होगा, सो इन स्टॉक है नॉट स्टॉक। सो ये बॉडी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे गेट प्राइसेस क्या चाहिए, स्टॉक नेम चिकन की, स्टॉक नेम का बेसिकली मुझे प्राइस चाहिए। सो एज अ रिजल्ट आपके पास HTTP 1.1 200 ओके का मैसेज आएगा, एंड देन यू हैव योर कंटेंट टाइप, योर लेंथ। Basically these two things are going to be the same thing. The entire thing is going to be the same except for the fact that यहाँ पर instead of your stock name chicken, you will have a message price which will be the price of the chicken that you have. Okay, so last topic and then I'm going to end this topic. So jumping back to web services, but before that let's talk about a little bit of intuition as to why we're using web service in the first place. So the first thing is your industry standard messaging. So industry standard messaging basically web services जो होती हैं वो messages पे work कर रही होती हैं। Now industry standard messaging के अंदर HTTP जो होता है वो it's very commonly used, you will see it everywhere being used. It's basically transporting protocol, right? So उसके अंदर हमारे पास एक protocol होता है, sorry, port number होता है 80 which is always on for firewall, and it is mostly a text based, it not mostly but it is like a text based ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसलिए हम जैसे हमने पहले बात की थी कि XML भी आपके पास एक मैसेज फॉर्मेट है, कॉमन मैसेज फॉर्मेट है, इसी वजह से हम XML को यूज़ कर होते हैं विद HTTP बिकॉज इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर an object neutral application. So I'm going to talk about this more in the distributed distributed systems lecture, but right now I just want to give some intuition. So the intuition is कि जब आप objects use कर रहे होते हैं when you're transmitting information through objects, तो objects में बहुत सारे मसले आते हैं, ठीक है। Again I will be explaining all of the problems in the other lecture, but just to know that कि उनमें problems आ रहे होते हैं, and उन problems को हटाने के लिए we started like sending our information in the form of messages, right? So messages का मतलब ये है कि मैसेजेस जो होते हैं आपके पास वो रोबस्ट होते हैं, स्केलेबल होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विच वाज बेसिकली अ बिट डिफ़िकल्ट व्हेन यू वर जस्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज योर ट्रांसपोर्टिंग protocol for sending information, and also that
जो आपके पास, हाँ, so that's all I think related to your messages. Yes, one disadvantage of messages that कि आप उसके अंदर टाइप डेफिनेशंस और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसको बताने के लिए यू हैव टू टेल एन इंटायर इनकोडिंग स्टाइल, राइट? ओके, next we are going to talk about the underlying structure of your web services. Those web services के लिए we have your SOAP and your XML, which is basically the fundamentals of web services, but we are also using web service security, web service addressing, and web service eventing. Web eventing is basically used for publishing and subscribing any content. So those are all of the technologies which are used for your web services. Lastly, the benefits of web service integrations are CCB MRI. C stands for basically it delivers, C stands for like connecting information. So connecting information, people, devices, applications, programs, all of that. It's very easy to use. It's very simple to use, more personal integrated experiences, right? The second C stands for what does it stand for again? It stands for cross platform. Yeah, so first is connecting, the second is cross platform, so it implements cross platform program, program to program, and communications, basically application integrations. So program to program काफ़ी आसान आप communicate कर सकते हैं. So CCB, B stands for business to business. So it's basically is very, it offers businesses to connect to their partners very easily for business to business applications. And then you have M, which stands for maintenance. So it reduces the application development and maintenance cost. So it basically saves you time and cost. And then you have R, which is basically means that it's creating revenue, and you can create your जो भी defined functions हैं या जो भी आपको useful functionality है, you can convert them into web services, right? So let's say कि I have a function of retrieving names from an Excel file. I can make that into a web service, and that web service I can just run that web service, and मेरे पास सारे names आते जाएंगे एक particular website से, right? And then you have I, which stands for basically solving the problem of system interoperability of data. I think so. I think that is for data. I don't know what that is, but I'm assuming that's data. Okay, so that's it.